अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम MSC स्टूडियो में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है कि अब तक जो हमने आपको नशरियात दिखाई हैं उससे आप महसूस भी हो रहे होंगे और उससे आप इस्तिफ़ादा भी हासिल कर रहे होंगे। हम एक दफ़ा फिर अपने स्टूडियोज़ में आए हैं और हमारे साथ इस वक्त कायद इसार मजलिस अंसारुल्लाह कनाडा मौजूद हैं। हम उनसे गुफ्तगू करेंगे कि हमारे कायद इसार के तौर पे और या इसार डिपार्टमेंट के तौर पे क्या सरगर्मियाँ होती हैं, तो थोड़ा सा उसका ओवरव्यू लेंगे। साल भर में क्या एक्टिविटीज़ हुई हैं और क्या काम हुए हैं तो वो लेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे साथ स्टूडियो में मेरे साथ को होस्ट मौजूद हैं नवीद मंगला साहब। तो नवीद मंगला साहब हमारे वो दोस्त जो उर्दू नहीं समझ सकते उनके लिए इंग्लिश में सवालात करेंगे ताकि दोनों चीज़ें जो है वो साथ साथ चलती रहें और इस हवाले से हम बात करेंगे। So on behalf of our Majlis Ansarullah, all the audiences that are watching us at home, Jazakallah for tuning in. We have Mubashir Bhai. I think my question to you would be, and maybe for all the English-speaking audience also, Qaid Isar is equivalent to what we have Khidmat Khalaq in Khulam al-Abdiya? Absolutely. Any difference at all? No, there's no difference except the title. Okay. Isar basically means putting others' needs before yourself. So serving, sacrifice, khidmat khalq. Yeah. That is the purpose of this department. Yes, it's a different title in Ansarullah, but the work is same as khidmat khalq. It is khidmat khalq actually. And then what Dawud was asking, that throughout the years, what are some of the activities that your department takes? बल्कि इससे पहले मैं एक सवाल ये करूँगा कि इसार के हवाले से जब हम बात करते हैं तो क्या इसार का मतलब सिर्फ ये है कि जो मजलिस के मेंबरान हैं उनकी खिदमत करना, या इसका पोर्टफोलियो जो इसका डोमेन जो है वो इससे बड़ा हुआ है? बिल्कुल। देखें, इस खिदमत खल्क जो है वो सिर्फ अपनों के लिए नहीं है, वो सबके लिए है। खिदमत खल्क हर मखलूक के लिए, हर किस्म के लोगों के लिए है। जो हमारा मजहबी तौर पे आप देखें तो दो ज़रूरी पहलू होते हैं, एक हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद। हुकूकुल इबाद में सब आ जाते हैं, तो उसमें सिर्फ ये नहीं कि अपने अंसार के लिए है या जमात के लिए है, लेकिन उसका दूसरा ज़रूरी पहलू ये है कि आप बाकी जो आपकी रेगुलर पब्लिक है उसमें क्या आप खिदमत कर रहे हैं। That reminds me that when Hazrat Anwar Talab Nasazi came to Guatemala Hospital for the opening of it, right? He mentioned this, that for those of you that are thinking that we're going to use the hospital for preaching, you're wrong. For preaching, we have a whole different department, but the whole purpose of Khidmat al-Khalaq and this kind of activities is for the welfare of mankind in general. Exactly. Yeah. Exactly. Without any strings attached. Exactly. I mean, the beauty of this department is that there's so many opportunities, and you're doing indirect tabligh in a way. Right. Because within Jamaat we do have activities. For example, we look after the senior members of Jamaat Ansarullah. This is one of the responsibilities, that we look after our own members as well. Those who are elderly, who are sick, who are maybe in nursing homes or hospitals, or they have reached that age that they need the extra assistance as well. So we, throughout the year, we keep tab on them to make sure that they're active and they're happy, and they're if they need any assistance. On the other side, another aspect is looking after the needs of others as well, outside of Jamaat as well. And through different programs, we look after the others. For example, we have the charity runs throughout Canada under Majlis Ansarullah as well. And we hold those runs specifically to raise funds for organizations and charities that help others as well. Right. So we partner with them, whether it's a hospital, whether it's a shelter home for women, whether it's an organization that looks after the disabled. We partner with them, we raise funds with them, and we help them out as well. Similarly, our Ansar go out and they feed the homeless as well. Especially during the winter season, they will go out to the downtown areas of different cities, and they will hand out food to those seniors as well. Another aspect is water, providing clean drinking water. By the grace of Allah, with the guidance and prayers of beloved Huzur Anwar, we started fundraising for the water well projects. Just last year, I believe we raised over $120,000 by Majlis Ansarullah for the water wells project. $120,000 by the grace of Allah. Just Majlis Ansarullah raised for the water wells project, which inshallah there's a plan to get that implemented, and that also under the guidance of beloved Huzur Anwar. Alhamdulillah, by the grace of Allah and with the prayers of beloved Huzur Anwar, we are doing everything under his guidance. And it's nothing to do with the SAR department, myself, or the Nazmeen, or anyone.
It's purely and purely the blessings of Allah Ta'ala that we're able to carry out this work. Sometimes we come across challenges that we as humanly, think it's not possible. I can give you an example of a charity run, for example. I mean, it's a small majlis, and they were struggling sometimes. We're not going to be able to get the funds raised. We're a very small majlis. The town is small. It might not work. But when you write letter to Huzur Anwar just for the prayers, everything turns around. That event becomes very successful. Recently I was in Lloydminster. It's a small majlis. Only 31 Ansar live in that majlis. The impact they've made, they've raised, I believe, $5,000, and they gave it to a local charity. So imagine the $5,000, how far that has gone just to help that local charity, to help people. And for the record, how many runs are Ansarullah taking care of throughout the year? By the grace of Allah, this year we added 2 more runs. So it's total 7 right now. Okay. The run for Aidri, and the run for Aidri, and also run for Guelph. After me, you'll hear from Bashir Rajpusab, who's the Zaim of Guelph, and he'll talk about the run for as well. So run for Aidri was a very successful run. We had, I believe we raised about $12,000 for that as well. First time ever. It was an excellent run as well. Similarly, there's so many other runs happening, and the impact is so much greater because we're partnering with these organizations, for example, hospitals. People come to our events, they learn about Jamaat, who are MDs, who are MD Muslim, who are MD Elders Association. That's how we do Tabligh indirect. At the same time, we are helping the locals as well. Qaid साहब, एक बात बुनियादी सवाल, खासकर जब हम इन तरक्की याफ्ता ममालिक में रहते हैं कि इसार के हवाले से जब हम दूसरे इदारों की हेल्प कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि फूड फॉर हंगरी और इस किस्म से, तो क्या वाकई इन ममालिक में एक आम तस्वीर होता है कि हम एक तरक्की याफ्ता ममालिक में हर एक के पास पैसा है, उसको ज़रूरत नहीं है, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि इन ममालिक में इनकी क्या ज़रूरत पड़ती है? देखिए, हमारा एक कॉन्सेप्ट है, हम समझते हैं कि एक होमलेस जो है वो शायद किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में होगा, या अगर डाउनटाउन यहाँ पे भी है तो उसका बहुत ही बुरा हाल होगा। अनफॉर्चुनेटली यहाँ की जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है और कुछ सालों से ऐसी है कि आम शख्स भी कई ऐसे हैं जिनको बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे बाउंड हो गए मॉर्गेजेस में, कार पेमेंट्स में, मुख्तलिफ चीज़ों में। लोगों के पास पैसे नहीं बचते कि अपने घर पे खाना भी वो फैमिली को खिला सकें, और कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि वो फोर्स अपने आप को एक किस्म का हो जाते हैं कि वो शेल्टर में जाके रहना है, और शेल्टर्स का जो सूरत हाल है वो इतनी अच्छी सूरत हाल नहीं है। तो ये जो हम जाके एक बार खाना किसी को दे देते हैं, वो बहुत बड़ी उनके लिए एक, मैं समझता हूँ, नेमत है, उनको काफ़ी हेल्प हो जाती है। कई बार विंटर क्लोथ अगर हमें देने पड़े वो भी दे देते हैं हम। आप फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक लोकल शेल्टर है, वहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारी एक गल्फ़ मजलिस है, बशीर साहब को दोबारा से एग्जांपल दूंगा। एवरी सिंगल फ्राइडे को खाना बना के ले जाते हैं और वहाँ पे जो शेल्टर में रहते हैं उनको खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप सोचें कि एक छोटी सी हम्बल एफर्ट है, एक आपने एक चावल की बोरी ली है, उसको खाना बना लिया, उसकी छोटी सी बिरयानी बना ली है, मिक्स पुलाव बना लिया और जाके दे दिया। सोचा आप कितने लोगों की मदद कर रहे हैं, कितने लोगों को अपने खाना खिला दिया। और इससे एक बात ये भी पहलू निकलता है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर अल्लाह ताला ने हमें अपनी नेमतों से नवाजा हुआ है तो उन नेमतों से हम जो हैं वो दूसरों की भी मदद करें। अगर हमारे पास हैसियत है तो हम दूसरों की मदद करें जो कि नीडी है, और यही इसार का जो है वो एक बुनियादी नुक्ता नज़र ही बनता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा था ना शुरू में कि इसार का क्या मतलब है कि अपनी नीड्स को पीछे करके दूसरों की नीड्स को आगे रखना। And with this in the Hamilton Jamaat too, they have a program which is being run by Ansarullah, Ahmadiyya Kitchen. So I think every second Sunday they would grab pizza or hot dogs and drop it off to homeless shelters. बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आप एक एक्स्ट्रा लार्ज पिज़्ज़ा में कितने स्लाइसेस होती हैं? 10-12 होती हैं। आप सोचेंगे 1 पिज़्ज़े से 10-12 लोग खाना खा रहे हैं। आप उनको ठंडा जूस देते हैं, साथ पिज़्ज़े की स्लाइस देते हैं, कुछ और चीज़ देते हैं। तो आपने अगर किसी को एक टाइम का खाना भी दे दी है तो वो भी आपकी खिदमत है। तो इसी लिहाज से बाकी जो बड़े इवेंट्स होते हैं वो बड़े स्केल के हैं। फॉर एग्जांपल रन फॉर विंजर माशाल्लाह हमारी बड़ी सक्सेसफुल रन है। हाईएस्ट अमाउंट रेज्ड इन रन जो है तकरीबन वो है ऑलमोस्ट 30-40,000। इस साल इंशाल्लाह उनका टारगेट 50,000 का है। तो इट मेक्स अ बिग डिफरेंस। अभी कुछ महीने पहले मैं विनिपेग में था, वहाँ पे जाके हमने इनाग्रेशन की जो प्लैक होता है हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल का सारा स्टाफ, उनका मैनेजमेंट को पता था कि हम कौन हैं, कौन है अहमदी मुस्लिम, कौन है, क्यों करते हैं हम ये। और प्रेजेंटेशन वहाँ भी दी तो काफ़ी उनका यानी कि बड़ा इम्प्रेस्ड हुए कि एक छोटी सी यानी कम्युनिटी है जिनके शायद नाम ना भी सुना हो एज सच, लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा है।
So this is the idea that, you know, every small step of kindness makes a huge difference that we might not recognize it. This is the blessing of Khilafat. Absolutely. Right? Because you have one person who's guiding us, right? And then regardless of where we're living, you go to any country, you meet any Ahmadi, it's like, you know, we're connected. Exactly. Yeah, exactly. Like you know, you've been asking me for a while to come to Belize because you were Murabi Silsila there. I finally got a chance to go to Belize, and I saw firsthand the Water for Life project that Ansarullah is sponsoring. Yeah. And it's amazing. It's not a huge project. It's a small room, maybe size of this, that has the filtration system. Yeah. But the impact is so greater because you're providing clean drinking water, whether it's in a pouch or a bottle or a gallon, but you're giving it to a family who does not have the means to buy or procure that clean drinking water. And many times we do it for free too. Exactly. जी जी जी. आपने बलीज का जिक्र किया, इसार के डिपार्टमेंट का एक जो काम है वो तो कनाडा के अंदर है, उसमें एक आपने जिक्र किया कि जो हमारे अंसार भाई हैं उनकी मदद करना, फिर आपने दूसरा कहा कि चैरिटी रन्स हम करते हैं जिसकी वजह से हम जो है वो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस की हेल्प करते हैं। इसार का एक जो क़यादत इसार मजलिस अंसारुल्लाह कनाडा है, उसका एक काम जो है वो मुल्क से बाहर भी चल रहा है, तो उसके हवाले से थोड़ा सा बता दें, और फिर उसके साथ आप ये भी बताएं कि जो अब मर्सी फॉर ह्यूमैनिटी का जो हमारा एक है उसके बारे में भी बताएं। जी जी, जज़ाकल्लाह, आपने अच्छा सवाल किया। कनाडा से बाहर भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह उसकी पाइपलाइन में है। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हमारा जो है वो सेनेगल में जो मॉडल विलेज का है, जो कि हज़ूर अनवर की हदायत और उनकी दुआओं के साथ मजलिस काम कर रही है उसके ऊपर। IEEE जर्मनी के थ्रू इंशाल्लाह हम करेंगे। उसकी ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से $100,000 हमने उसकी डोनेशन दी हुई है। सेनेगल में एक वहाँ पे जाके असेसमेंट की थी, मुख्तलिफ टाउन्स सेलेक्ट किए गए, फिर उसमें से बताया गया कि इस टाउन की ये ज़रूरत है, ये ज़रूरत है, ये ज़रूरत है। वो भी फिर हज़ूर अनवर की खिदमत में पेश किया गया और हज़ूर अनवर ने डिसाइड किया कि कहाँ पे हम जाके मॉडल विलेज बनाएं। तो सेनेगल का एक छोटा सा गाँव है, शायद मैप में नज़र भी ना आए वो, लेकिन वहाँ पर इंशाल्लाह मॉडल विलेज का प्रोजेक्ट चल रहा है, उस पर काम होगा इंशाल्लाह। ये है। दूसरा वाटर वेल्स का जो मैंने जिक्र किया था शुरू में, वो भी हज़ूर अनवर की हदायत के लिहाज से हम इंशाल्लाह उनको बनाएंगे IEEE के साथ, ये जो भी हज़ूर अनवर जैसे फरमाएंगे, तो वो काम चल रहा है। तो इंटरनेशनली भी ये बड़े ज़रूरी सिंपल चीज़ें हैं, लेकिन एक क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के जो प्रोजेक्ट्स हैं, दे गो अ लॉन्ग वे, दे गो अ लॉन्ग वे। And those of us that are sitting at home and want to pitch in towards these different programs, what is the best way? Absolutely. Before I answer that question, he asked me another question which I did not answer. It was regarding Mercy for Humanity. Right. So just like we have Beacon of Peace in UK and Ansarullah, all the charity runs and all their charity work is under that umbrella. Similarly here in Canada, Mercy for Mankind, which Khudam Ahmadiyya does. So by the grace of Allah, with the guidance, prayers and approval of Huzur Anwar, Majlis Ansarullah has launched the Mercy for Humanity. Even the logo of Mercy for Humanity was approved by beloved Huzur Anwar. So there's blessings behind all this. So all this work is done behind the scenes. Inshallah, once all the legalities and the registration process is completed, we'll be launching it fully. But the work behind the scenes is happening on that as well. And that is also with the guidance and the vision of beloved Huzur Anwar that we need to diversify to help humanity as much as we can. To answer your question, if anyone wants to donate towards water wells, if you go to, for example, Jamaat members, they can go on to the amjinc.ca, the portal for Chanda, and there's a head called Ansar Water Wells, so they can donate there as well. For the charity runs, I would recommend and suggest to our brothers and sisters who are listening that if you have a charity run in your local majlis, halqa or Jamaat, please support that. There's a separate pages set up for each charity run, and they can go online and make a donation, or they can register to take participation. We have one charity run that's coming up for this year, Run for Golf for the first time. So if you live in the Milton region or in that region, please do come out and support our local golf team. Similarly, we have Run for Edmonton coming up, and Run for Winnipeg coming up next weekend as well. So by the grace of Allah, next 3 weekends are busy as well. So anything you donate, goes for a good cause. Qaid साहब, आपकी थोड़ा सा याददाश्त का इम्तिहान लेते हैं। हम ये रन जो कर रहे हैं वो तकरीबन 3-4 साल से हमारी हो रही है। कुछ अंदाज़ा है कि इन 4 सालों में जो हमने इतनी रन की है, उस पर टोटल हमने तकरीबन कितनी फंड रेजिंग की है,
जो कि हमने मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस को दी है। 3-4 साल का तो शायद मेरा मैथ इतनी अच्छी नहीं है, स्कूल में भी अच्छी मेरी मैथ नहीं थी, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि पिछले साल तकरीबन हमने 5 रन में से 88,000 कलेक्ट किए थे। माशाअल्लाह। तो इंशाल्लाह इस साल उस टारगेट को भी हम बीट करेंगे। और ये सिर्फ एक रन का इस साल टारगेट 50,000 है, तो देख लें। और ये रन आस्ता आस्ता जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी, इसका सोसाइटी के अंदर इम्पैक्ट भी बढ़ता जाएगा और मजलिस अंसारुल्लाह के रिकॉग्नाइजेशन भी बढ़ती बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। वो इसलिए कि मैं समझता हूँ कि हज़ूर अनवर की दुआएं पीछे। बल्कि अगर आप शेयर करें विनीपेग की जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने रिकॉग्नाइज किया था, इसी तरीके से हैमिल्टन में भी हुआ है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। विनीपेग में जैसे जिक्र किया थोड़ी देर पहले कि उन्होंने भी हमारी एफर्ट्स को, डोनेशंस को, जो पार्टनरशिप पर रिकग्नाइज़ किया और एक नया वार्ड बना था जिसमें उन्होंने हमारी प्लैक को इनाग्रेशन की थी और वहाँ पे उनके मैनेजमेंट आई, बड़ा उन्होंने रिकग्नाइज़ किया, अच्छा इवेंट हुआ था। उसमें प्रेजेंटेशन भी हमने दी जमात के बारे में, तो वो भी एक किस्म की तबलीग हो गई। सिमिलरली हैमिल्टन में भी एक इवेंट हुआ था जिसमें हमने चेक प्रेजेंटेशन की है और जो फंड रेजिंग की है उसका हमें एक्चुअल रिजल्ट नज़र आया सामने। जो फंड रेजिंग हमने रन फॉर हैमिल्टन की, उसके लिए कैंसर पेशेंट्स के लिए स्पेशलाइज्ड मशीन है। तो जो हम फंड रेज कर रहे थे वो फंड करी थी उस मशीन को, और वो मशीन लोगों की लाइफ सेव कर रही है, कैंसर पेशेंट्स की। सो यू कैन सी कि जो हम $30-40 पे करते हैं एक चैरिटी रन के लिए, वो पैसे कहाँ डाइवर्ट होकर जा रहे हैं कि आप किसी की लाइफ सेव कर रहे हैं। Any inspirational moments from going on different runs, doing different activities, or visiting other countries that you want to share with our audience? There's so many. You know, when we're saying how Isar department, you know, I was talking to someone and they said, you know, from UK, I was talking to someone and he said, you know, if Isar department is active in your majlis, your entire majlis will be active because it's in a department that can really it involves everyone. Yeah. And the simple thing, for example, Run for Adri, we had some Khudama and Isar doing duty. The first time in that town they were doing this event, and just a small, and these guys were standing in a parking lot controlling traffic, and the local residents came out and gave them a bottle of water, saying that you guys are doing amazing work, right? That gesture of goodness shows that people appreciate what you're doing and they recognize that you're doing something for their own local community as well. And there's so many other examples, you know, if you're providing a single slice of pizza to someone, and you'd be amazed how much thankful they are to you because you're providing the single slice of pizza, which we might take for granted. You know, we eat pizza all the time. Sometimes it sits on our counter. Sometimes it's leftovers are sitting in the fridge, and we don't, you know, take, you know, the impact we're making for a small thing, and we take small things for granted. One example I want to mention is that once in Belize we were invited for an interview like this, where they were asking the MD, the host was Qaid MD, and his question was that when we already have Sunnis in this country, what are you guys doing? Right. Why have you started your own mosque, right? And before I got to answer, a local person called live in the show, and he said that I want to say as a local that we want Ahmadis to stay here. Exactly. The reason is because these are the only people that come and ask how we're doing, that work with our youth. None of you guys do this. Exactly. Right? Even these Mormons that usually go, they're only there for 4 or 5 months, 6 months, and they're gone. But our missionaries are staying there for years. We become part of them. We work with them. So there's no doubt that the impact of this Khidmat al-Khalaq in Isar department, especially in these countries, right, that need these social services is huge. Huge. Yeah. Absolutely. And the recognition that Jamaat gets out of it, you have no idea. Right. And you know, and people do notice how organized by the grace of Allah Jamaat is. Small Jamaat, and it's but organized. Organized because it's Khilafat. Right? Yes. So whether it's Lajna, whether it's Atfal, whether it's Khuddam, whether it's Ansar, they see this organization that everyone has gotten together to hold one event, and we have raised $5,000. $5,000 is not a big amount for, quite frankly, if you ask me, right? As a Jamaat to raise. We have, by the grace of Allah, members who can donate that one amount. But when they see this organization in the background, that everyone gets together just for that one cause, and they're raising funds, they're impressed. They're like, no other organization can meet this, right? They can't come even close to this. And our audience that are listening to us at home, we want to emphasize that our Jamaat is very unique in the sense that we're blessed to have a leader, a spiritual head of the community that can guide us. And where the rest of the Jamaats, the rest of these religions or different sects, whether they're Islam or Christianity, they do not have that. I remember in Belize, there was a mosque that they were building for Qaid Ahmadis. There was a huge donor that sent some money from the Saudi Arab or something.
and their mosque was much bigger than ours. But only one segment of it got done, and after he stopped sending money, the reason was because he couldn't trust the locals. Yes. Now, comparing that to our mosque, every small portion that got completed, we would send pictures to Azur, right? Azur was okay, he would send us, I've seen the pictures, go ahead and continue. Even for small projects, a small country like Belize where I had that experience, that guidance is there. Exactly. You know why my department work is very easy? I'll tell you why. Because everything we do is under the guidance of Azur. Right? If we want to drill water wells, we'll ask Hazur, where do you want us to drill water wells? There's a blessing in that, right? If we're stuck somewhere, we write a letter to Hazur Anwar for prayers. Exactly. If we want to do a project, we write a letter to Hazur Anwar. If we want to do such, it's such a, that whatever he says, we follow. Go with the flow. That's it. और इसी हवाले से अगर हम देखें जो हमारे इसार का काम है, ये सारा वॉलंटियर वर्क है जी, और जो फंड रेजिंग हम करते हैं रन्स के जी, उसका 100% जो है वो जाता है चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस को। तो क्योंकि वॉलंटियर वर्क है, कोई इसमें पेड एम्प्लॉय नहीं है, तो जितना भी हम कर रहे हैं वो सारा का सारा जो है वो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन जाता है। खैर साहब, मुझे पता है कि आपके पास इज्तिमा की भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, आपने करना है, आपने अपने मसरूफ़ वक्त में से, और ये हकीकत मैं देख रहा हूँ कि आपका मसरूफ़ वक्त है, उसमें से आप वक्त निकाल के आए, हमारे साथ बैठे, अपने डिपार्टमेंट का नाजरीन को आपने बताया, और नाजरीन के लिए ये कि जो क़यादत इसार के तहत जितने भी प्रोग्राम होते हैं उसका मेन मकसद खिदमत खल्क है, और उसमें यही है कि हम अपने मेम्बरान को, गैर ज़मात लोगों को, जो हमारी सोसाइटी के लोग हैं, उनकी हम खिदमत करें और उनसे हम दुआएं लें, और यही हमारे मज़हब की भी तालीम है, यही हमारे खलीफा वक्त की भी हमारी हदायत हैं। तो इस पर शामिल हों, और जो भी क़यादत इसार के तहत प्रोग्राम हुआ करे उसमें आप लोकल लेवल पे, रीजन के लेवल पे या मजलिस के लेवल पे ज़रूर शामिल हुआ करें। On behalf of all you sitting at home, I would like to thank Mubashir Bhai for joining us here today. Thank you so much. Jazakallah, बहुत शुक्रिया। Jazakallah, अस्सलाम वालेकुम। ये रोज़ कर मुबारक सुबहान मैया रानी, ये रोज़ कर मुबारक सुबहान